टाइम बचा यार उमा। क्या? हाँ कर लो ना, तो पीछे बैठ के लिख लेना। एक और मीटिंग कर लें कि नहीं, हम तक जानकारी नहीं आएगा। हमसे काम कर लो। सैटरडे आज नहीं है, आज उनकी छुट्टी अपनी संडे। आओ बैठो ना भैया, करवा दो बस, यहाँ का हुआ कि वहाँ करवा दो। हाँ बस फिर सॉरी सर, फॉर डिले, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? यस मैडम। जी जी मैडम। जी, मैं डॉक्टर सोनू राजी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय को क्योंकि विद्या का मंदिर कहा जाता है, अतः कोई भी कार्यक्रम बिना सरस्वती वंदना के प्रारंभ नहीं की जा सकती है। अतः मैं मैडम से निवेदन करती हूँ कि सरस्वती वंदना प्रारंभ करने में मदद करें। मैम, अब आई, ऐसे पकड़े रहे। कौन से नंबर पे? 56। हमारा काम करो, इसको क्रम से लगा डालो। हाँ दिखा दी तुम्हारा किसी छूट अभी शुरू नहीं, अभी मैडम नहीं बोल रही हैं कुछ। राशि बेटा पहुंच गई है। ये बेटे देख रहे हैं। जमा हो जाएगी तो इन्हीं लड़कियों को लगा दिया जाएगा, तो क्रम से लगा डालेंगे। फार्म में तो नहीं लेकिन हाँ सीट और सीट जो है ये सर, ये वाला काम करा लेंगे। फॉर्म मतलब इसका नंबर फॉर्म दस्तखत करना पड़ेगा है, पेज नहीं दिख रहा ना ऐसे है। ये सब छोटे मोटे काम हो जाएंगे, अपन दस्तखत भी करेंगे, अटैचमेंट भी कर लेंगे। हम जैसे कि वैसे झंझट काम चाहिए ना आपको। जिंदगी में शुरू ही नहीं क्यों नहीं लेना, म्यूट है। हेलो अंजी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार नमस्कार। Am I audible? Am I audible?
म्यूट योरसेल्फ प्लीज। आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद मैडम। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर नीता सिंह हमारे बीच आज उपस्थित हैं हमारे विषय डॉक्टर दीपक राही सर, प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर रोहित शर्मा, साइंटिस्ट नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्सेज एनसीएमआर पुणे से। मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं वेबिनार की कन्वीनर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राजश्री पांडे मैडम, को कन्वीनर डॉक्टर रश्मि अर्नोल्ड एवं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर रोशनी कचेर, डॉक्टर उमेश मिश्रा, डॉक्टर संध्या सिंह राठौर, अनामिका सिंह, इन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर एम द्विवेदी सर, हमारे महाविद्यालय के एवं अन्य सभी महाविद्यालय से जुड़े हुए प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं हमारे वेबिनार का विषय माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। इस थीम पर हमारे आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हमारे विभाग के द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह पहला वेबिनार है जो कोरोना काल के बाद आयोजित किया जा रहा है। कोरोना एक छोटा सा माइक्रोब है, वायरस है, पर वह किसी बड़े दुश्मन से कम नहीं है। कोरोना से लड़ते जो शहीद हुए हैं हमारे महाविद्यालय की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती है एवं जिन्होंने अपनों को खोया है इस कोरोना काल में किसी भी वजह से, उनके लिए एवं उन सभी के लिए जिन्होंने अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस खोया है, उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहाँ बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहाँ बंधी जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ खबरों में कहाँ कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है। हमारी फोटो पत्थर की क्या बहती नदियां रुकती हैं? क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पाना पड़ता है। जिसमें मशाल सजता हो चलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जोश और से आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर नीता सिंह हमारे अतिथि एवं हमारे वेबिनार की शुभ आशीष प्रदान करें। मैडम, प्रिंसिपल मैडम, अब रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, सीधे फिर घर दे काम खत्म। जूम है मैडम किसी नीता सिंह मैडम, आवाज आ रही है मेरी?
फीडबैक चाहे भरे नहीं तब भी मैं तो बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैडम आ रही है, प्लीज मैडम के अलावा बाकी सब म्यूट हो जाइए। एक्चुअली में पहले जुड़ रहे थे, जुड़ ही नहीं पा रहा था, हो ही आवाज नहीं आ रही रहा है। था। यस मैडम आ रही है आवाज। बोलिए कि बाकी सभी लोग म्यूट हो जाए। आवाज आ सब रही लोग प्लीज म्यूट हो जाइए। मैडम आ विशेषज्ञ रही है आवाज। वक्ता डॉक्टर दीपक राही, प्रोफेसर चेयरमैन माइक्रोबायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, एवं डॉक्टर रोहित शर्मा, समझ गए कैसे साइंटिस्ट एनसीसीएस पूरे कार्यक्रम की कन्वीनर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर राशि पांडे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सोनू राही, को कन्वीनर डॉक्टर धीरे रश्मि धीरे अनार, बोलिए मैडम। विभाग के सभी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स, आईपीएससी कन्वीनर डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी जी, सभी प्राध्यापक, गेस्ट फैकल्टी, छात्राएं, शोधार्थी और लिंक से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य, आप सभी का मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। शासकीय कन्या महाविद्यालय के मैडम की तरफ से आवाज खत्म हो गई। मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी। नीचे बेटा। आप सामने देखिए, कैमरा की तरफ देखिए और सर नीचे थोड़ा कीजिए। डॉक्टर दीपक राही, प्रोफेसर एंड चेयरमैन, एंड दूसरे हैं डॉक्टर रोहित शर्मा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एवं दूसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रोहित शर्मा, साइंटिस्ट। आप दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, आपका मार्गदर्शन हमारे युवा छात्रों के लिए एक नई दिशा, एक नई सोच देगा। मैं आप दोनों का व्यक्तिगत रूप से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। वनस्पत विभाग की विभाग अध्यक्ष वेबिनार कन्वीनर डॉक्टर राशि पांडे व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सोनू राही ने इस वेबिनार के माध्यम से दूर दूर से विषय विशेषज्ञों को छात्राओं के ज्ञानवर्धन के लिए जोड़ा है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई। उन्हें इस वेबिनार की सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। विभाग के सहयोगी सदस्य डॉक्टर रश्मि अनार, डॉक्टर सोनू राई, डॉक्टर संध्या राठौर, डॉक्टर रश्मि कचेर, श्री उमेश मिश्रा, कुमारी अनामिका सिंह को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी इसी प्रकार विभाग और महाविद्यालय के हित में अनवरत कार्य करते रहे। विषय बहुत ही रोचक है। बायोटेक्नोलॉजी में जो नई नई खोजें हो रही हैं, उसमें माइक्रोब्स ही मेन टूल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। माइक्रोब्स जो है एवरीवेयर है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, दोनों तरह का इनका इफेक्ट होता है। ये बेनिफिशियल भी होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। मुख्य रूप से बैक्टीरिया, आर्चिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ की डायवर्सिटी वैसे तो इम्पोर्टेंट ही है, पर अगर ये जो इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, जैसे इकोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, सेग्रीगेशन, पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए ये इकोसिस्टम आवश्यक होता है। इसमें इन माइक्रोब्स का रोल होता है। मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे इस हो रही है इनोवेशन के
राष्ट्रीय पोषण के हमारे जो है तथा आपने 2 किताबों में अध्याय लेखन भी किया है। मैम, आपने कई संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता के रूप में जी व्याख्यान मैं आशा करती हूँ आप उनकी इसमें मदद करेंगे। मुख्य वक्ताओं का एक बार फिर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने महाविद्यालय को समय दिया है, छात्रों का ज्ञानवर्धन किया है। धन्यवाद और अपने आयोजकों को वेबिनार की सफलता के लिए शुभकामना और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, आपके ब्लेसिंग्स और गुड विशेस के लिए धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर राष्ट्रीय पांडे, कन्वीनर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैडम को विषय प्रवर्तक के रूप में आमंत्रित करती हूँ। जो आए और हमें विषय के बारे में Good afternoon to all the delegates and participants. The theme of today's webinar preparing the meeting. ये देखो join. पहले अपने आप को अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Good afternoon to all the delegates and participants. The theme of today's webinar, Microbial Diversity and Biotechnological Innovation, is to draw attention to the significance of microbial diversity as a major resource for biotechnological products and processes. The topic is approached from two complementary standpoints. First, an attempt is made to assess the extent of biodiversity, particularly microbial diversity. In this field, the application of the modern techniques of molecular biology is to enable the detection of completely unknown groups of microbes and also the extent of genetic diversity within microbial taxa. Microbes are immensely diverse and have numerous metabolic and products that are useful for industrial applications. Metagenomic approach has been used successfully in recent years to obtain novel microbial products from uncultured microorganisms. Different technology, including metagenomics and nanotechnology, is the way forward for tapping the real potential of microbial metabolism for applications in biotechnology. Today, we are glad and honored to have two eminent scientists who are working on fungi, particularly in our nation. We are fortunate to have their lectures. We
can learn and enhance our knowledge in this field. Dr. Deepak Rahi, Professor and Chairman, Department of Microbiology, Punjab University, Chandigarh, is a learned professor who is working on white rot fungi to use it in industrial, food and pharmaceutical arena by extracting exopolysaccharides and other metabolites. Similarly, Dr. Rohit Sharma, an eminent scientist C, NCCS, NCMR, Pune has been working on fungi for many years. He did marvelous work by collecting so many unexplored fungal species from Sikkim for novel uses of fungi in the field of various biotechnological process and industrial applications. So we are sure that from these lectures, we are going to have deep and useful knowledge of fungi for its better bioapplicability. Thank you. धन्यवाद मैडम, आपने विषय के संबंध में हम सबको जानकारी दी। धन्यवाद। Now I would like to introduce Dr. Deepak, whose introduction is not mere enough to introduce his achievements, even though I would try to say few of his work. Dr. Deepak Rahi is professor and chairman at Department of Microbiology, Punjab University, Chandigarh. He did his PhD in microbiology in year 2002 and joined the Department of Microbiology, Punjab University in 2008. His area of expertise are industrial microbiology and applied mycology. He is presently working on biodiversity of higher fungi, fungal metabolites of industrial significance, especially exopolysaccharides and its applications as bioemulsifiers, biosurfactants, antioxidant, etc., and lignosilolytic enzyme for textile, pulp, and paper industry. Dr. Rahi received Research Project Award of UGC under Plan 10th in year 2004. He has been appointed as reviewer of 11 international journal of repute, including Applied Biochemistry and Biotechnology, PLOS 1, Process Biochemistry, etc. Besides, he received 6 Best Paper Presentation Award in different national and international conferences. Dr. Rahi has successfully completed 5 major research projects of various funding agencies like DBT, DST, DSTUT Chandigarh, UGC, and 3 research projects are successfully going on his laboratory as principal investigator. He has published a total of 60 research papers in international and national journal of repute with H index 8 and I10 index 3. It is worth mentioning here that he has developed an efficient technology of enzymatic denim biobleaching using lactase and filed a patent also. 5 students have successfully obtained PhD degree under his supervision, and 5 students are pursuing their PhD with him. He has 18 years of research and teaching experience. Dr. Rahi has organized 20 conferences, seminars, and workshops and participated in 38 national, international conferences, symposium, and workshops. He delivered 23 invited talks as resource person in various national, international conferences and symposium. He is also life member of various scientific societies, including AMI, MSI, IMGA, etc. Besides, Dr. Rahi has been member of various selection screening committees. His persona cannot define in a day. Simply, I would like to request Dr. Deepak Rahi to raise the curtain and guide us with his knowledge.
Sir, please. Okay, thank you, Dr. Sonu, for a very nice and elaborative introduction. Thank you very much. So, am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much. So, Honorable Dr. Neeta Singh, Principal, Government Girls PG College, Rewa. Dr. Rashri Pandey, Head Department and Convener of this very webinar. Dr. Rashmi Arnold, co-convener of this webinar. Dr. Sonu Rahi, Organizing Secretary of this webinar. Other speaker of the event, Dr. Rohit Sharma, Scientist C at NCMR, Pune. Dear research scholars, students and participants, a very good afternoon to you all. First of all, I would like to congratulate the entire team of this very webinar who have selected a very relevant topic, or I would say a very relevant theme of this seminar in the present scenario, and it is justifying also in present scenario. So as we all know that we are passing through a very difficult phase of time where the entire human being and humanity is at stake, and we are struggling for the life, and this is due to our tiniest microorganism. So this is due to a tiniest microorganism, and that is virus, and this is a form of diverse virus, that is the diversity of that particular pathogenic virus which has caused such a pandemic, that is pan world epidemic. However, this is important to note down that our dedicated scientists and workers have devoted their day and night to get rid of this problem, and they have developed a very successfully vaccines against this COVID-19 disease by employing biotechnological intervention. So what I want to say is that it is the microbial diversity which acted as catalytic force, okay, which acted as catalytic force and which led the innovation in the form of vaccine, and that too in a record time, and that does not matter whether the diversity impacted negatively or positively. However, here it acted negatively, but it is due to the diversity that we have got the solution. So now how it was possible? It was possible when our scientists thought across the limit, when they saw beyond the limit, जिसको हम कहते हैं we need along with दृष्टि के साथ हमें दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है, तभी हम जो है इनोवेशन की तरफ लीड करते हैं. Only then we achieve certain innovative goal. So this is the innovation, when we think and act beyond our capability. Okay, so that is the innovation. So today in my lecture, I will focus on the significance of microbial diversity. Then we'll discuss about the uses of fungal diversity. So I am going to start my lecture by sharing the slide. Okay, let me first share the slide. First slide. So is it visible? अरेस्ट करने आ रहे हैं. So is it visible? दिख रही है slide? Sir. Dr. Sonu, slide is visible? बिल्कुल दिख रही है. Okay जी. Yes, okay. sir, visible. Okay. Thank you. Okay, let me put it on slide show so it will be bigger. पंजाब यूनिवर्सिटी का है, चंडीगढ़. Please mute yourself. Other candidate, please mute yourself. लीव करें. Okay. So as I was talking, the biotechnological innovation. So as I said, the very source is microorganism and its
diversity. So what I am saying here, that what leads to biotechnological innovation? So it is the microorganism, that the main source is microorganism and its diversity. Then where in biotechnological interventions, we use their microbial products. What are the products? Products are enzymes or metabolites. By virtue of these microbial products and metabolites, we do the innovations. So all these constitute together biotechnology, the discipline of biotechnology. That is, if we define the biotechnology in a word, we can say that is the manipulations at molecular level. Means we are modifying, we are manipulating the things according to our need, according to our desire. So that is the biotechnology. And when we say about innovation, innovation means when we think beyond limit, when we think across the vision. So it gives the novelty. And what is our goal? The goal is to enhance the quality of life. So let's discuss. So these are the important milestones of biotechnological innovations, or we can say these are the evolutions of the biotechnological innovation. So as we all know, or we might be knowing, that in year 1919, Hungarian agronomist Karl Erke coined the term biotechnology. Okay, so may I request the audience to please mute yourself. It is causing disturbance to me. May I request audience, please mute yourself. Other candidates mute हो जाइए please. Otherwise host can mute them. There is a facility. There is a facility if they are not muting. Okay. So am I audible now? Okay. Now it is okay now. Yes. Please mute yourself, please. So in सर, डॉक्टर दीपक सर, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. डॉक्टर दीपक राही सर, प्लीज. उनका म्यूट. सर डॉक्टर दीपक राही. दीपक राही चला गए हैं ना, फिर से अनम्यूट करेगा. हेलो सर. हेलो सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? दीपक राही सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. आपकी आवाज क्लियर आ रही है. Okay, now am I audible now? Yes sir, yes sir. Yes sir, you are quite audible. Okay. Thank you. So I was discussing the milestones of biotechnology. So in 1919, the term was coined, biotechnology term was coined, and in 1928, the penicillin was discovered. In 1944, it was found that it is the DNA which carries the genes, and in 1954, it was discovered that the DNA is consisted of double-stranded molecule, and in 1969, the first enzyme, that is ribonuclease, was synthesized in vitro. And in 1983, the first genetically modified transgenic plant, that is tobacco plant, modified herbicide resistant plant, was discovered, or we can say it was genetically by biotechnological intervention, it was formulated. Then in 1997, the first clone of mammal was invented, that is the Dolly sheep. Then in 1998, a draft of human gene map, means human contains 30,000 gene, and it was first time it was sequenced in 1998. And in
2010, the first synthetic cell. As we all know that Rudolf Virchow said that cells arises from pre-existing cells, but this was disproved by synthesizing the cell, that is living cell in vitro. That is the innovation, that is the milestone innovation, I would say. Then in year 2013, the first bionic eye is produced in the US, giving hope to blind people in the world. Means first synthetic eye organ was invented. Okay. And similarly, at present, we are fighting against this very prevalent pandemic virus, and our scientists and workers, doctors have successfully, using biotechnological interventions, they have discovered the vaccine against this SARS-CoV coronavirus. So these are some of the important milestones. Now, so this slide shows the innovation. Innovation can be done using biotechnological intervention in the field of medicine, industry, food, and environment. And we already have done or achieved various milestones. So this is the latest example where investigators demonstrated the ability of trained dogs to detect aggressive prostate cancer from urine sample. So here they are using they are improving the biosensor, olfactory sense of the dog to sense the volatile organic compounds in urine, microbial profiling, and artificial neural network assisted examination. So this is I would say the recent and very latest milestone innovation in biotechnology. Okay, and this will go and this is the result of our thinking beyond the limit. So we can divide or we can group biotechnological interventions into 7 important clusters. That is the red biotechnology. This is the health branch and responsible for development of medications, drugs. So in red biotechnology, innovation is done in the field of medicine. Then green biotechnology in the fields of agriculture. White biotechnology in the field of industry, especially in biofuels. Then yellow biotechnology is especially focused on food production. Then blue biotechnology that exploits the marine resources to obtain aquaculture, etc. Then gray biotechnology, its purpose is the conservation and restoration of natural environmental ecosystem. Okay, so then gold biotechnology, and this is also known as bioinformatics. So here in gold biotechnology, and this is responsible for obtaining, storing, analyzing, and separating biological information, means deducing the results, interpretation of results, and verifying various principles, various hypotheses of biotechnology through wet lab experimentations. Okay, so these are the important innovations which we can group into 7 research and developmental areas. Now coming to microbial diversity, as I said, okay, the very mother source of all these innovations are microbial diversity, and we can say microbial diversity comprises mainly of distinct groups like bacteria, archaea, cyanobacteria, fungi, and viruses. So broadly, we can classify them into prokaryotes and eukaryotes, and their root is common. Their root is common, means they are ancestrally connected to each other. Okay. Now coming to the diversity. So this picture is very important, and it depicts the extent of microbial diversity present. You can himself or herself judge by seeing this cube. So the smaller cube represents the diversity which is already identified, and the bigger cube represents that this amount of or this much of diversity is yet to discover. So आप जज कर सकते हो कितनी diversity अभी भी पड़ी हुई है जिसको अभी explore नहीं हुई है, that yet to be explored, and there are various factors as mentioned here. So I think these modern identification techniques are very expensive. So this is the main reason. Then
their taxonomy related issues are there. People do not like this technique, this taxonomy related work. They run behind molecular. So this may be the reason. Dr. Rohit will explain it better. Now, so this is the estimated number of species in each kingdom as per species fungorum. So this is the very latest data, and we can judge the microbial diversity. So see the protozoa. Protozoa has about 8,000 estimated species. Viruses have about 3,000. Bacteria, archaea has 5,000 estimated species. Then bacteria, then fungi. Out of these fungi is the largest group which possess the maximum diversity. That is why fungi is regarded as versatile, most prominent microorganism, and that's why I have chosen the topic fungal diversity. In this very webinar, I wanted to put stress on their diversity, their uses, and their industrial importance. So we can employ these fungi in the field of food, industry, agriculture, environment, and the production of chemicals, fuels, and biomaterial. So there are a number of global problems like antibiotic resistance, pollution, shortage of fuels, etc. So by using the development, there is a need to important innovative development, employing various innovative biotechnological techniques to address these problems by using microbial products. And among those products, exopolysaccharide is one which may prove important in this field. So, but the problem is that being a spectacular molecule, macromolecule, it has been not given the deserved attention. So let's start the exact topic, that is exopolysaccharides from white rot fungi, spectacular industrial macromolecule. So now I'm going to tell you the untold story of this very special macromolecule. So why the exopolysaccharide from this white rot fungi have been unexplored or underexplored? So there are various reasons, like diverse habitats of white rot fungi remained unexplored. Then constraint in culture isolation and maintenance. So it is very difficult to isolate the culture and to maintain them in vitro. This is very important. Dr. Rohit will focus on this. Then slow growth rate. These fungi grow very slowly. They take 3 days to appear there or to show their first growth appearance on artificial medium. Then constraint during submerged growth condition. When these organisms are grown submerged under liquid culture, then there is its own problem related to fermentation. Then main focus remained on, this is very important point. So the main focus of scientists, industrialists, businessmen all remain on the enzymatic potential, especially the lignocellulosic enzymes of these white rot fungi. Nobody bothered about the other metabolites, that is significance of exopolysaccharide. So, and this caused the reluctance of screening and fermentative experiments related to exopolysaccharide. Then again, very important thing is that a lack of academic coordination. We people, I don't know why, we do not share our research. We do not share our work. So that is very hopeless thing. Then lack of industrial awareness about exopolysaccharide. So this is very important. So these are the factors that's due to which this white rot fungi and their metabolites have been less explored. So let's start with macromolecule. So what is macromolecule? We know macromolecule is a very large molecule which commonly consists of large molecule with a single smaller subunits called monomers. So there are 4 major classes of biological macromolecules, that is carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. So these are the important macromolecules, and these are the monomers, monosaccharide,
fatty acids, nucleotides, and amino acids. So these are the monomers, and the polymers are made up of, they are made up of by polymerization of these monomeric units. For example, carbohydrates made up of monosaccharide, lipids are made up of monomers of fatty acid, nucleic acids are made up of nucleotides, proteins are made up of amino acids. So macromolecule provides carbohydrate, they give structural support. Okay, lipids is the source of stored fuel. Then nucleic acid, the ability to store and retrieve genetic information. Okay, then proteins, the ability to speed up the chemical reactions, that is in the form of enzymes. Enzymes are made up of proteins. सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, दीपक सर, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes. Okay. 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 So exopolysaccharides. भैया फिर आप म्यूट हो गए दीपक सर. Okay. So exopolysaccharides. Am I audible now? Yes sir. Yes sir. Yes, you are quite audible. Now you are audible. Okay. Okay. So exopolysaccharide, which is also called as EPS in abbreviated form, is a long chain polysaccharide containing branched repeated units of sugar or sugar derivatives, which get secreted into the surrounding environment during growth. So EPS is generally composed of macromolecules such as polysaccharide, which constitute about 40 to 95%, and it also contains certain non-sugar components like proteins, that is 1 to 60%. Then nucleic acid constitutes about 1 to 10%, and other humic substances and lipids. So the form of EPS produced by organisms can be subdivided into two types, that is bound EPS and loose EPS. Bound EPS means when they are closely or tightly bound to the cell, as it is shown here in this left hand side of the figure here. So this TB is the tightly bound exopolysaccharide, which is attached very tightly to the cell wall, and loosely bound, which is present in a very loose form, which are far away from the cell, as it is shown here in this picture towards right hand side. That is, it is the soluble EPS. So it occurs in two form, that is bound and soluble form. सर आप फिर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. हाँ, यस सर. Okay. Now composition. So microbial exopolysaccharide can be classified into two types. That is the homopolysaccharide, which are composed of only one type of monosaccharide, as it is shown here with this yellow diagram. So this each box represents the monomeric unit, that is glucose or sugar unit, and all the sugar units in homopolysaccharide are same. So this is the example of linear unbranched homopolysaccharide. And secondly, homosaccharide branched homopolysaccharide. So this is an example of homopolysaccharide which may be linear or branched. And second is the heteropolysaccharide. Heteropolysaccharides are when they are constituted of more than one monomers, that is different colors, green, blue, yellow, they all represent different monomeric units. So when there occurs the polymerization of more than one monomers, then they constitute the heteropolysaccharide. So this is an example of unbranched, that is linear heteropolysaccharide, and below that is the branched
heteropolysaccharide. And so heteropolysaccharides have got very much industrial significance because due to branching and due to presence of large number of different monomeric units, they give rise to different industrial properties. So these are the examples of some white rot fungi belonging to heteropolysaccharide and heteropolysaccharide groups. And these are the role of exopolysaccharide in organism. So it is very interesting to note that what these exopolysaccharide play, their role in the organisms. What is the significance of why organism produce these exopolysaccharides? So they help in adhesion. They help the microorganism to get attached to their substrate. Then bacterial cell aggregation. They also help in cell aggregation, in forming biofilm formation. Cell to cell bridging is caused due to this exopolysaccharide only. Then water retention. So there are certain hydrophilic exopolysaccharide which have high water retention ability and thus maintaining a hydrated microenvironment around biofilms, and this lead to the survival of desiccation in water deficient environment. है ना, जब पानी की कमी हो जाती है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आता है, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है. दे बिकम एबल टू सस्टेन द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. देन कोहेशन एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन, दैट इज द सेम. The nutrient source. So these exopolysaccharides serve as a source of nitrogen, phosphorus, carbon. So they act as nutrient source. Then this again, the very important, that is protective barrier. So these exopolysaccharides confer resistance to non-specific and specific host defense during infections and other protection they provide to different microorganisms. Then sorption of organic compounds. So this is very important property, means they have got the biosorptive properties, means they have got the ability to absorb various pollutant of the environment like heavy metals, etc. Okay, so these are some of the important roles of exopolysaccharide in microorganisms, and these are the classification of different polysaccharides based on their varying sources. So these are various sources. We can get the polysaccharide from higher plants, as you all be knowing that starch, cellulose, guar gum, gum arabic, locust bean gum. These are all the polysaccharides we get from higher plant. Then algal polysaccharides, that is alginates, galactans, carrageenans. All these are polysaccharides we obtain from algae. Then animal origin, chitin and chitosan, glycosaminoglycans, hyaluronic acid. So all these are polysaccharide we obtain from animals. Then polysaccharide from microbial origin, that is we obtain from different microbial groups, that is dextran, gellan gum, pullulan, xanthan gum, etc. So these are various sources, and these are commercially available. Microbial polysaccharide, they are all commercially available and used industrially for various purposes like dextran, xanthan, levan. And so this, for example, levan is the monomeric unit is fructose. तो fructose की कई units को जोड़ करके ये levan molecule बनता है. तो fructose जो है यहाँ पर it act as monomeric unit. Similarly, dextran act here in dextran is a polymer of glucose. So monomeric unit is glucose and it is produced by leuconostoc. Similarly, levan was produced by Bacillus, Streptococcus, Pseudomonas, Zymonas, etc. and so on. So you just see the diversity of these exopolysaccharides. So this is very important, and it gives me pleasure to inform you all that in our house practice and since time immemorial, we are using these polysaccharide, plant-based polysaccharide in our home, in our kitchen also. हम पहले कपड़ों के अंदर स्टार्च करते थे. What is starch? Starch is a polysaccharide. Okay. Then arrowroot, हम arrowroot यूज करते थे, है ना. तो as a food thickener, सब्जी को थिक करने के लिए हम यूज करते थे. So these are polysaccharides. So now we are focusing some innovative uses, innovative sources of these polysaccharides. Okay. So microorganism and especially the fungi are proving the innovative source, and they are proving the innovative applications also. So coming to fungal exopolysaccharides, a number of fungi including higher basidiomycetes and lower filamentous fungi and yeast, they have got a very much good ability
to synthesize EPS in laboratory under in vitro conditions. But of these, the white rot group have gained much importance comparatively due to application that not only indicate the alternative source of marketed plant or seaweed polysaccharide, but also have some new and interesting industrial bioapplicability also. So these beautiful pictures are of certain important white rot fungi. The why they are called as white rot. So इसको हम white rot क्यों बोलते हैं? Why they are called as white rot? Because as we know, they are potential wood degrading fungi. They degrade the hardwood and convert the lignin portion of the wood by their enzymatic potential and convert it into white colored biomass, that is in the form of fructification, white colored fructification. That's why they are called as white rot fungi. And mostly white rot fungi grow on hardwoods like birch and aspen. However, certain species of softwoods such as spruce and pine also harbors white rot. So, and these are the prominent examples, like this is Ganoderma, this is Forms, Pleurotus, and Schizophyllin. So these are important white rot fungi. And this is important figure. This is important figure, and this is the figure of we have contributed a chapter in edited book, and it is in press. So, and this indicates that this figure indicates the distribution of white rot in the kingdom fungi, and it contains, white rot group contains 4 order which have 14 family and 475 species, genera, and about 10,565 fungal species. So you can just think of the diversity of these white rot fungi. Okay, and these are the pictures. These are the beautiful pictures of white rot fungi, which I have isolated from various biodiverse localities of Shivalik hill ranges of Chandigarh capital region. So, white exopolysaccharide produced by white rot fungi have got certain industrial significance also, like they behave as therapeutic agents. They have got certain bioactive substances and have been identified showing health promising benefits also. And these polysaccharide also act as immune modulator, that is they can alter and enhance immune responses against cancer cells, bacteria, viruses, and oxidative stresses via indirect and non-specific mechanism that potentiates and alerts human immune system, जिसको हम बोलते हैं immunity. So what is immunity? In immunity there are certain cells that I will explain you later on. So that cells play an important role here in providing the individual immunity, and in that these polysaccharide, they act as the catalytic force. They impact the immune system. They modulate the immune system. Okay, so these polysaccharide also act as dietary fibers with hypolipidemic, hypoglycemic, anti-atherogenic, and prebiotic properties. Okay. Okay, so these are the commercialized polysaccharide, commercial polysaccharide obtained from different Ganoderma species. So this is Ganoderon. This is a polysaccharide Ganoderon which is obtained from Ganoderma. Then Gripholin is obtained from Grifola species. Then Lentinan is obtained from this Lentinus species. Similarly, the Pleuron is obtained from Pleurotus. This is beta-glucan is obtained from Polyporus species, and Schizophyllin is obtained from this Schizophyllin species. So coming to production, now this is very important कि कैसे इसको हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है. So there are 2 ways to obtain these polysaccharide. Number 1, we can obtain it from submerged fermentation, or by directly we can extract from dried fruiting bodies. So let's see which one is better. So the first is exopolysaccharide extracted from
fruiting bodies. So the polysaccharide which yield or extracted from fruiting bodies and mycelia is relatively low and its cost is high. Okay, while which we obtain from fermentation, that is by culturing them under liquid condition. So in that case, we obtain the higher yields and it is cheaper also. And here, when we obtain directly from fruiting body, it takes several months for mushroom to grow into the fruiting bodies and on solid substrate. So we wait for very long to go and collect these species, then we dry it, then we make it its powder. So that is very long and tedious time consuming process. While here, with the help of fermentation, we can easily obtain in shorter time. So, and here the product composition and properties cannot be altered. Yes, this is very, very important point. So when we obtain the exopolysaccharide from fruiting bodies, their properties cannot be altered. While here we have got an edge. Here we can modify their properties by providing them different nutritional sources. So this is very important properties of these microorganisms, and we can obtain by fermentative production. And then secondly, when we obtain it from direct from fruiting bodies, there requires harsh extraction process. It requires very harsh and costly steps, while here harsh extraction step can be avoided. So this is the importance. And so it is better to obtain these exopolysaccharide by submerged liquid fermentation under shake flask. So this is the fermentative production. So I will discuss in very brief fermentative production of exopolysaccharide. So this is upstream. So here for fermentative production, what we require growth of white rot mushroom in basal medium. For that we require potato, dextrose, agar, malt extract, just for the pure culture. We maintain the pure culture on this, then we grow it under liquid broth, that is malt extract broth or whatever medium we have optimized. And this is the standard fungal shaking conditions, like 28 degrees centigrade of temperature, shaking under 150 rpm, and incubation period of 10 to 15 days. So after this incubation period, at the end of the cultivation period, we get the fermentation broth. हमें इस फर्मेंटेशन पीरियड के बाद हमें मिलता है फर्मेंटेशन ब्रॉथ. उस फर्मेंटेशन ब्रॉथ के अंदर दो चीजें होती हैं. दैट फर्मेंटेशन ब्रॉथ कंटेन्स two things. Number one, our biomass of this fungus, and secondly its metabolite, that is the exopolysaccharide. Now what we do, now we extract the exopolysaccharide from that fermentation broth. So the next slide depicts that process. So here, yes, so this is the fermentation broth, and these small balls represents the fungal biomass. So what we do, we simply first filter it, and then filter it, and after filtering there are certain remnants still remained in that flask. So we centrifuge it at 10,000 rpm for 20 minutes at 4 degrees centigrade. So as a result of this centrifugation, we get two things, supernatant and mycelial biomass. We separate the mycelial biomass, and then we take the supernatant for further extraction. Now this is important. Now this our aim is to isolate the exopolysaccharide. So अब लेकिन यहाँ पर उस exopolysaccharide के अंदर अभी that is not pure, that still contains some other substances like protein. So what we do, we simply first remove that protein. That is, it is known as salting out. So we generally remove protein by adding 5% trichloroacetic acid, that is TCA, and we give the overnight incubation at 4 degrees centigrade, followed by again on next day we centrifuge it at 10,000 rpm for 20 minutes at 4 degrees centigrade. Then all precipitated proteins are removed. Then again we get the supernatant. Then again what we do, then again in this supernatant we add 4 volumes of chilled ethanol. इस वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर जो हमें की प्रोटीन रहित हमें जो ये सॉल्यूशन मिलता है, जिसके अंदर की एक्सोपॉलीसैकेराइड होते हैं, इस एक्सोपॉलीसैकेराइड को जनरली हम एल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन से या कोई भी जनरल मेटाबोलाइट्स को, जनरली मैक्सिमम ऑफ मेटाबोलाइट्स आर सेपरेटेड आउट बाय एल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन.
So we can optimize which type of alcohol we need. As in this case, I have optimized the ethanol. So with the help of this ethanol, we precipitate the exopolysaccharide, because this ethanol has got the capacity to bind to precipitate the polysaccharide only. So this white layer shown in this flask is the precipitated exopolysaccharide. So this is the precipitated exopolysaccharide that we can separate it out, and we further disperse it in water. We dialysis it. Dialysis means this is a pre-purification step. Then we go for final purification, and we store it by lyophilization. So this is the entire downstreaming process, means extraction of exopolysaccharide. Okay, now that was the fermentative production, कि जब हम fermentation से कैसे obtain करते हैं. Now this slide shows the exopolysaccharide extraction directly from the dried fruiting bodies of white rot fungi. So what here we do, that is the rest of the steps are same, but we require certain prior step that is different. So what we do, we collect the fruiting bodies of these white rot exopolysaccharide, we dry it properly. After drying it, we mill it, we make powder of that, then we distill it at 80 degrees centigrade with distilled water. Then we again filter it, centrifuge it, and then rest of the process are same. We first remove the alcohol with ammonium sulfate, then we precipitate exopolysaccharide with 4 volumes of ethanol, and at the end we obtain the exopolysaccharide, and we go for dialysis, purification, and lyophilization step. So that is about extraction. Now, purification. So purification, we generally purify our exopolysaccharide with the help of gel filtration chromatography and ion exchange chromatography. And we all know that gel chromatography is based on the principle of molecular size. And here in ion exchange chromatography, we separate our molecule on the basis of charge. Then, so this is the slide showing the purification by gel chromatography. So there is no need to discuss. We all know this. Then purification by ion exchange chromatography. As I said, it depends on the charge basis separation. So again, we all know this. So no need to give time on this. Now, yes, this is very important. Once we obtain the purified exopolysaccharide, हमें एक बार purified exopolysaccharide जब मिल जाता है, then we characterize it. What types of characteristic present in our exopolysaccharide, and because their application, their usage directly depends on their characteristics. So for obtaining or characterizing them, we use various techniques like thin layer chromatography, TLC. With the help of TLC, we determine its monosaccharide, that is monomeric units. Then we go for differential scanning colorimetric to determine heat stability. We also check solubility, whether it is soluble in which form, organic or inorganic solvent. We go for electron microscopy, that is SEM, to determine its surface texture. Then we go for FTIR to detect the functional group present in the structure. Then we go for XRD, that is X-ray diffraction, to determine the atomic and molecular structure. Then we go for MALDI-TOF for the structural analysis of oligosaccharides. Then we go for SCHBLC to determine the molecular weight. Then, so these were all molecular parameters, physical parameters, and biochemical parameter, in which we determine its carbohydrate estimation and protein estimation. This is overall the how we characterize our exopolysaccharides. Now coming to this is important part, that is application. So we can divide the applications into two types, that is pharmaceutical applications and industrial applications. What are pharmaceutical applications? Pharmaceutical applications are immunomodulation. As I discussed earlier, antioxidant, they have got immunomodulating properties, antioxidant properties, antimicrobial properties, they have got prebiotic effects, then functional foods and nutraceutical properties. Similarly, they have got certain industrial applications like bioflocculation, bioemulsification, thickeners, stabilizers, and polymer film formation. So my research work is mainly concentrated on this.
So at present, I am working on these aspects because there are already a lot of work on these medical uses, and still there are lot of work that require, and we are working on this. So let's discuss the first medical application, that is immunomodulation. As I said, the polysaccharide act as immune modulators, means they can alter and enhance immune responses against cancer cells, bacteria, viruses, and oxidative stresses. So a number of in vitro studies on human cells lines and various clinical trials have verified the immunomodulating or stimulating properties of polysaccharide by white rot fungi, and lentinan and schizophyllin are two of the most well-studied polysaccharide that are known to have immunomodulating properties. They by stimulating the secretion of tumor necrosis factor, that is TNF-alpha, by human monocytes and activation of macrophages. So these are the cells, immune cells, which participate in providing immunomodulation. Similarly, glucans from Grifola frondosa and Trametis versicolor have also have done certain clinical trials where they have proved to present these properties. Then gynoderine is another fungal biopolymer that has been used as adjuvant cancer therapy. So these are some of the important medicinal uses of this exopolysaccharide. Now their mode of action, as I said, so these are various cells, immunity cells. We must have studied in our lower classes: macrophages, dendritic cell, neutrophil, NK cells, B cells, T cells, they all, and these are the various principles by which they act as they provide immunomodulatory properties. They enhance, they kills the pathogenic cells, they kills the pathogenic antigens, moieties, and provide immunity to us. इसीलिए हम कहते हैं कि मशरूम का काढ़ा पियो, गैनोडर्मा के सॉल्यूशंस आते हैं उसको पियो, जिससे कि ये वायरसेस के अगेंस्ट भी ये काम करता है. तो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड वी डिड दिस एक्सपेरिमेंटेशन. Next property is antioxidant property. That is the antioxidant polysaccharide extracted from this various white rot fungi such as Ganoderma lucidum, Trametes versicolor, Lentinus idiots, Pleurotus lenteus exhibit reducing and chelating properties which inhibit lipid oxidation and reduce oxidative stresses. So what actually they do? So these antioxidant activity is the ability of white rot mushroom polysaccharide to scavenge the reactive oxygen radical species. तो ये क्या करता है? ये reactive oxygen radical species को absorb कर लेता है, उसको scavenge करता है and limit the production of oxygen free radical. जो oxygen free radical होता है, as it is shown here in the picture, this is very unstable molecule. This is unstable molecule, and this results in respiratory burst also. जिससे हम बोलते हैं हमारी एजिंग की प्रोसेस बढ़ती है. इसलिए उस एजिंग की प्रोसेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट they play very important role. What are antioxidants? Antioxidants have got stable molecule. They scavenge the oxygen free radical. So this is antioxidant. It scavenge. ये जो इसका unstable molecule radical है, इसको इसके साथ ये bind करके ये स्टेबल बना देता है, और इस तरीके से एजिंग की प्रोसेस और बहुत सारी चीजें जो हैं, इट स्टॉप्स, इट प्रिवेंट्स, एंड वेरियस कॉस्मेटिक क्रीम्स, various healthcare products are antioxidant in nature. Then antimicrobial properties. So there are certain of these, there are maximum exopolysaccharides produced by these white rot fungi are used against various pathogenic microorganisms, viruses, and other pathogens like lentinan, glucans, ganoderine, schizophyllum. They all have got this antagonistic properties. So this slide shows the antimicrobial activity of this Pleurotus florida, the edible white rot fungi, against E. coli. This clear light zone shows the the polysaccharide of Pleurotus florida is killing the E. coli, and here this zone shows the killing action of this Klebsiella pneumoniae. Okay.
Now then, prebiotic effect. So this is very important. What is we all know probiotic. What are, for example, curd, probiotic. What probiotic do? Probiotic functions as they improve the intestinal flora, intestinal bacterial flora, and condition our intestine. They enhance our digestibility of certain substances, and they are helpful in anti-diabetic, anti-cancer, and anti-obesity mechanisms. So, and what are prebiotic? Sorry. So prebiotics are the substances on which these probiotic organisms grow. So these exopolysaccharides are good sources of prebiotic on which the probiotic organisms grow and maintains our intestinal flora at par. So certain of these white rot fungi like Lentinus Ganoderma lucidum, and Schizophyllum communis, etc., they all have got good prebiotic effects. Now, functional foods and nutraceuticals. So a number of functional foods and nutraceuticals have been developed recently based on these polysaccharides. So beta-D-glucan isolated from white rot fungus like Lentinus idodes can be used as replacement of wheat flour because they are very much rich in fiber. So they can be used in baked goods also. As nowadays we are mainly stressing on, we are mainly in our home also we use multigrain wheat. So we can also replace those multigrain wheat with these polysaccharides. So this is the innovation, and people are still using these polysaccharides in noodles or with wheat flour. And this provide fiber content, antioxidant, hypercholesterolemic effects, etc. So this is the important innovatory application of these exopolysaccharides. That is the same thing. We are all using these exopolysaccharides in various kinds of Indian snacks like papad, oyster mushroom papad. Okay. And these are the exopolysaccharide producing white rot species. So ये सारी white rot species है जो कि important medical effect or health benefits they provide, like immunostimulatory, antioxidant properties, antibacterial properties, antiviral properties, etc. So you just yourself judge the significance of these white rot fungi. Now coming to industrial properties. Industrial properties mean bioflocculation. Bioflocculation is a very important property. So flocculation is an essential parameter used for the removal of suspended solid particles from solution, for which a variety of natural and synthetic flocculants are employed. So inorganic and organic synthetic flocculants are widely used due to their low cost and better efficiency. However, they possess inherent drawbacks of being a source of carcinogenic monomers and are often non-biodegradable. तो हम अभी यूज करते हैं इन flocculants को कुछ पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए, स्पेशली इन फील्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर के अंदर. ओके, लेकिन ड्यू टू देयर दीज हार्मफुल इफेक्ट्स वी डू नॉट प्रेफर देम एंड वी आर लुकिंग फॉर नेचुरल पॉलीसैकेराइड बेस्ड bioflocculant. So I am also working on this aspect. So that could replace currently used organic, synthetic and toxic chemical reagents, since they are biodegradable, non-toxic and free of secondary pollution risk also. Here, well, so this the polysaccharide produced by white rot fungi show remarkable bioflocculating properties or potential, and however very few reports are there available on the bioflocculant production by white rot fungi. So chitosan is one kind of polysaccharide based on flocculant produced by white rot species. So in what actually happens here, so this green color, these represent the flocculation functional group. So this flocculation functional group binds with this polysaccharide, and when we add this kaolin act as flocculant. So when these polysaccharide and flocculation group, this flocculant group
binds with these kaolin particles, they get attached with these kaolin particles, and we get easily settled down, and we can easily separate it. So this is the main mechanism of bioflocculation. Now, next property is bioemulsification. So bioemulsification is very important property. So what is bioemulsification? Bioemulsification is a property which nullifies or neutralizes certain conflicting properties of two liquid, and they allow the solubility of these two, or they allow these two different liquid to mix together in one single phase, as it is shown here. So there are two phases at here. In this left hand side bottle, there are two phases shown with yellow and blue color, and in between there is a red color. So this red color is the emulsifier. So what actually this emulsifier do? This emulsifier get bound on this yellow layer. तो ये इस येलो लेयर के ऊपर ये बाउंड हो जाती है, एज इट इज शोन हियर इन दिस पिक्चर. So this emulsifying or emulsifier get coated on this phase, that is this phase, and once it is get coated on this phase, and then after homogenization reaction, this liquid, that is this phase, get mixed with this. ये वाला phase इससे पूरी तरीके से mix हो जाएगा. अगर ये emulsifier नहीं होता तो ये mix नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पर emulsifier use किया है, उसके बाद ये mix हो गया, and here we are getting the continuous phase emulsion, 100% emulsion after homogenization. Okay. So this is the property of emulsifier. हम emulsifier use करते हैं. We use emulsifiers salad के अंदर use करते हैं emulsifier. In mayonnaise के अंदर हम use करते हैं emulsifier. हम toothpaste के अंदर use करते हैं, moisturizer के अंदर use करते हैं emulsifier को, because they all possess the Newtonian properties. Now thickeners, as I said earlier, they also act as thickener. They makes the liquid viscous. So there are certain formulations both in medical and in industrial where we require the thickened liquid to work. So we generally use these polysaccharide based thickeners. Next important property is polymer formation. Polymer formation, that is biodegradable film, that could be defined as primary packaging made from biodegradable polymers and food grade additives. So polysaccharides such as cellulose derivatives, chitosans, starch, and other gums are being reported as raw material to prepare edible films and coatings that can be used as packaging material for food preservation. However, the area pertaining to use of polysaccharide produced by white rod for films formation are still remain unexplored. ये अभी unexplored है, लेकिन आप सोचिए nowadays it is still we use cling sheet. हम मार्केट के अंदर cling sheet यूज करते हैं. जब हम जाते हैं hot dog या sandwiches, वो wrapped होती हैं. They are wrapped either in butter paper or in this cling sheet. So that are to certain extent non-degradable. They are non-biodegradable and may impart harmful effect due to the chemical present in that cling sheet. But you just think, when we use this polysaccharide based biofilm as food packaging material, and that too when it is antimicrobial, it is antioxidant, so you just think the health giving benefit. So I am working on this also, and this is the food packaging film formed by one of my PhD scholar. This was the polysaccharide produced by one white rot fungus, that is Pleurotus pulmonarius, and the candidate has did the PhD on this. So this was the polysaccharide film produced in my lab. So these we can cluster these applications in various sectors, as I discussed. Now, I also would like to give glimpses of work or highlight my work, what I am doing. So I am exploring the diversity of this particular region. So this is the study area. As we all know, Chandigarh. In Chandigarh, there is a prominent Shivalik hill ranges as lower Himalayan ranges.
known as lower Shivalik ranges of Chandigarh capital region. So this is the map of that in my study area, and I'm mainly concentrating on this. So this is the Sukna Lake, that is very much famous Sukna Lake present in our city, and you just think around this lake the thick diversity. So this thick diversity, the diversity of climatic condition prevalent in this region have made it a natural habitat of large number of white rot fungi. But till date, no concerted efforts have been made to preserve them, to isolate their culture. So what I am doing, I am especially working on these, and till date I have finished 5 research projects on these fungi, and I have got a good number of culture collections also in my lab. So although this work is not on white rot fungi, but I have worked on lower fungi, that is yeast. So this was the yeast, and this work was done by one of my PhD scholar, Kanchan Lata Yadav, and she got the PhD. So here we obtained a black yeast, Oreobasidium pallulan. We extracted, we cultivated it under submerged fermentation condition, and we could able to obtain the white EPS. Generally, the EPS produced by this particular fungus is black in color, and it goes lots of efforts for bleaching of that blue black color. But this particular fungus got the EPS produced by this particular fungus got white in color. So this was the advantage, and we optimized various conditions, and we characterize it molecular, chemical, and other parameters, and we obtained very good results. That is, initially when it was screened for a EPS exopolysaccharide, it was able to produce 4.56 gram per liter. But after final optimization and statistical validation, we could able to produce up to 45.1 gram liter. That is a 9.89 fold increase in its yield. So this was the leading result, and that is for the first time we have reported this much of yield. Okay, my slide is not moving further. I am okay. So this is the this was the strain Oreobasidium pallulan RYLF10 that we produce in our lab, and till date it was the highest. Now, so this is the applications that we explored. This is the biofilm formed by that particular isolate. Then we also obtain 56% of emulsifying property, and we also obtain antioxidant activity. And then another work by another scholar, that is Deepika Malik, she also obtained PhD on this work. So this work was on Pleurotus pulmonarius, that is white rot fungi. We could able to produce it under submerged fermentation. We extracted the EPS, and we explored certain applications also. So we found this particular fungi possess the emulsification, bioflocculant, and antioxidant properties. Here again, we have first of all reported the maximum yield, that is 7.9 gram per liter till date. So this is very significant work that we did in our lab. So as I said, so we screened it for bioemulsifying property, and it possessed about 60.1% bioemulsification activity with the paraffin liquid at a concentration of 2%, and bioflocculant property about 90%. Okay, and with the standard present 96.4 and R present 90.3, that is almost the same. And similarly, we obtained a good antioxidant activity also. So now I am working on a very innovative aspect of these exopolysaccharide, and one of my research scholar, Ekta Chaudhary, is working on this for her PhD. So the major problem in the application of exopolysaccharide in various fields is their low solubility. They easily get oxidized and degradation on exposure to aerobic and acidic environment, which leads to difficulty for maintaining their biological activity. So it is therefore important to find an efficacious
delivery system to improve the solubility and stability of these exopolysaccharides. So our lab is currently working on the development of exopolysaccharide based nano emulsion, which have a huge potential in resolving the associated problems. So I will not discuss much on this. So this is the graphical abstract of the work, or this is the hypothesis which we have formulated for her PhD work. This is the micellar action will form the nano emulsion through which the solubility, digestibility of these exopolysaccharide based product can be improved. So I am working on this and I have got certain good results also. And these are various publications related to exopolysaccharides in various national and international journals. So this is my research team. These are they are my MSc and PhD students. So they are not all students because I did not get the photographs of all of them. So this was made by my research scholars only in my research lab. So these are the pictures of our celebrations. Whenever we have birthday of our students or my birthday, they celebrate in our lab. And whenever we get our paper published in some good journal, we celebrate that also. So these are that moments. And this is the pictures of my lab. We have got a very good, sophisticated, well-equipped lab. That is lab number 324 at my department, and I have got all the instrument that is needed for our research, like spectrophotometer, centrifuge. This is centrifuge, spectrophotometer, reflectance meter, etc. So I am okay again. So people in my lab, my research scholar working in my lab. So now, so that was my lab. Now let's I also want to show the glimpses of our university. So this is a very important building, that is Gandhi Bhavan. That is a heritage building and a major landmark of Punjab University, and it is center dedicated to the study of the words and works of Mohandas Karamchand Gandhi. It was designated by the architect Pierre Jeanneret, a cousin of Le Corbusier. So I would like to tell you that as we know, the Chandigarh is known as City Beautiful, and there you find a same type of structure, buildings. Okay, so that particular building in 1960 or 64, when it was started building, it was designed by French architect Le Corbusier. So this is the Rose Garden of, although Chandigarh city itself has got a good rose garden, but this is the rose garden of our university. We also have developed our rose garden. This is a PU, that is Punjab University, and we every year in the month of February or March, in these months we celebrate the Rose Festival. And this is again very important. This is again the very classical building, and this is a heritage building. That is, it is a Dean Student Welfare Office, a student center, because the office of student council is also situated here in this building. And at the top of this building, this round building has got a good Indian coffee house. Cafeteria is there, and we faculty as well as students go during their lunch or when they are free to have coffee. And this picture shows various buildings of our university. This is the administrative block, that is main administrative building of our university. Yes, this is very important. This is Cactus House, harboring more than 1,000 varieties of cactus. So this is the botanical garden, P. N. Mehra Botanical Garden of Punjab University, where we have harbored about the 100 varieties of cactus. So this is a glass house. This is a very important typical glass house. This is outside. This is triangular, in a pyramid shape, and this is from inside. And we can get very large number of unique varieties of cactus. So that's all. Thank you very much. If you have any questions, you are most welcome. Thank you very much.
भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या सर से? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही। ओके ओके, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? एग्जिट तो मैं चला जाऊंगा ना फिर। नहीं, शायद यहीं से वो तो बर्फी का बहुत बस हो रहा है। Yes, please. A very good afternoon to everyone. वाली भाभी अगर अम्मा घर में हो जाए ना एंड से दीवार आई कैसी होता है इधर ओ कैसे दीवार ना है चीज प्रकाश भाई के रास्ते कैसे हम साथी ना फिर भाई मेरे होत अच्छा ये बताओ कौन मेकअप करता कौन है नेक्स्ट स्पीकर? सर डॉक्टर दीपक सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं डॉक्टर आरपी जोशी, एग्रीकल्चर कॉलेज रीवा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, यस। जी सर, थैंक यू सर। So much impressed with your introductory and brief and descriptive idea regarding your research work, and it will be grateful to us if you share your literature also in the soft copy. Thank you. A very good afternoon to everyone. आज के हमारे वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपक राही ने माइक्रोबियल डाइवर्सिटी और बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि व्हाइट रोज फंजाई जो कि वुड पर ग्रो करता है और ये कई तरह के मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करता है जिनका इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, बायोएक्टिव प्रोटीन, टर्पेनॉइड्स, फेनोलिक कंपाउंड, स्टेरॉल एक्सेट्रा, जिसमें से एक्सोपॉलीसैकेराइड के सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल, ये थेरेपेटिक एजेंट की तरह वर्क करता है, इसके कई हेल्थ प्रमोटिंग बेनिफिट्स हैं और ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह भी काम करता है। साथ ही इसमें डाइटरी फाइबर, हाइड्रोलिपिडेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल जैसी कई प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। यही कारण है कि इस फंजाई का इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे वेबिनार को अटेंड करने वाले सारे डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिद्ध होगी और इस क्षेत्र में यदि कोई रिसर्च करना चाहता है तो डॉक्टर राही का लेक्चर उसके लिए काफी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए हम डॉक्टर राही के हृदय से बहुत आभारी हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जब भी हमें उनके दिशा निर्देशों की आवश्यकता होगी वो हमें अपना मार्गदर्शन अवश्य देंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज यहाँ पे रुकें। नहीं, मैं नहीं, I will stay here, but actually I have to go in a meeting. So for next 15 minutes I'll be here. Okay, okay, thank After you. 15 minutes I would like to leave. After Okay, 15 we minutes. understand. Thank you Yeah. very much. Thank you. Okay. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही मैडम, आ रही। नाउ हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स हैं डॉक्टर रोहित शर्मा, जिनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं डॉक्टर संध्या सिंह राठौर से आमंत्रित करती हूँ कि वे डॉक्टर शर्मा का इंट्रोडक्शन दें। प्लीज डॉक्टर संध्या। हेलो हेलो, डॉक्टर रोहित शर्मा, कैन यू हियर मी? अनम्यूट करो। Yes, Dr. Sonu, I can hear you. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Firstly, it is my great honor and pleasure to introduce an eminent scientist, Dr. Rohit Sharma. Dr. Rohit Sharma, scientist C at National Center for Microbial Resources in NCCS, where he was after more than 3,000 research contributors. Along with these, his research mainly had focused on the isolation and identification of fungi from various niches across the country and looking for their biotechnological importance. Dr. Sharma has a total of 38 research publications and 11 book chapters published in national and international journals of repute. Dr. Sharma has successfully completed 4 major research projects as principal investigator. At present, his area of research include fungal taxonomy and systematic, fungal diversity and ecology, and biotechnological applications of fungi. It is such an honor for us to have you today between us. Thanks a lot, sir, for joining us. Now, I would like to welcome Dr. Rohit Sharma, sir. So please welcome and enhance our knowledge with your own experiences. So please, sir, welcome. Thank Dr. you. Rohit Sharma, sir. Yeah, thank you, Sandhya madam, for the nice introduction. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And at the onset, I'd like to thank Dr. Sonu Rai and all the other members of the committee who have invited me for the talk, and they are doing a really good job. Sir, please share your screen, please. Yeah, I'll share. And I'll also thank Dr. Deepak Rai, sir. He has been my senior during my PhD days. So my, is it visible, my screen? Is my screen visible? Yes, visible. And slides change हो रही हैं? Yes, Is it change हो रही है. Yeah, fine. Okay. So I'll start my talk. I'll thank Dr. Rahi here, and I'll try to maintain the momentum that Dr. Rahi has put up for the microbial diversity thing and the bioprospecting. So what I'll like to share in my talk is the fungal diversity of national parks and their bioprospecting. So although Dr. Rahi has already explained about what is fungal diversity,
national parks, so everybody knows what are national parks. So there are certain of the regions within our country which have been conserved or preserved for their wildlife as well as the plant things. So we are trying to look into the fungal diversity of those regions, and we are also looking into the bioprospecting. Bioprospecting means similar what Dr. Aiza has told, that the applications, ये जो applications हैं, ये fungi हम जो वहाँ से isolate कर रहे हैं, उन्हीं फंजाई की हम फिर उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी देख रहे हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स होता आप बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं, किसी को क्वेश्चंस हो तो, या आखिरी में आप क्वेश्चंस लेना चाहें तो आखिरी में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी, ये दो प्रोजेक्ट का मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ। हम दो बायो नेशनल पार्क्स कवर कर रहे हैं। एक अचानकमाग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है। इसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ में, और दूसरा जो नेशनल पार्क है वो फेमलोंग नेशनल पार्क सिक्किम में है। तो ये दोनों नेशनल पार्क्स हम कवर कर रहे हैं, इन दोनों की डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं। तो अचानकमाग से हमने जो डाइवर्सिटी कवर की है उसमें करीब 182 सैंपल्स हमने इकट्ठे किए थे, जिसमें प्लांट लीव्स, मशरूम्स, सॉइल, देन प्लांट सॉइल एज वेल एज ये सारा चीज हमने कवर किया। तो टोटल 182 सैंपल्स हमने कवर किए थे, और इसमें से 228 सैंपल्स आइसोलेट किए गए हैं। तो ये आइसोलेशन का जो पोर्शन है ये हमने रायपुर यूनिवर्सिटी ने पोर्शन लिया हुआ है, सैंपलिंग करते हैं वो जाके, और देन दे isolated also in different medias like PDA or different other medias. Okay, so this is Achanakmag wildlife diversity. It is around 200 kilometers from Raipur, and it is a very good diversity. You can see some of the photos. It has good number of amount of forest into it. Good amount of wildlife is also there. It is basically made up of mixed forest as well as sal forest. So most of the forest is made up of mixed forest also. So these are some of the photographs of mushrooms that were collected from the forest. So on the top left, you can see it's Macrolepota. On the lower portion, you can see some of the Rasula that have been isolated. And on the right hand portion, you can see some of the bolids as well as the Termitomyces also. So these have been collected from the forests of the Achanakmag and Amarkantak Biosphere Reserve. So the second one is the Phambong Low Wildlife Sanctuary of Sikkim. So here also we are undertaking collections. So here we are collaborating with Nar Bahadur Bhandari Degree College, Tadong, and they conducted around 16 sampling trips, and they have isolated around 282 fungi. उन्होंने वहाँ से isolate की हैं, और ये सारी फंजाई फिर वो वहाँ से आइसोलेट करके हमारे पास भेजते हैं। हम एनसीएमआर में यहाँ पे इनको रिवाइव करते हैं, और रिवाइव करने के बाद में इनको फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए लेते हैं, और ये प्रिजर्वेशन भी वहाँ करते हैं। प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? प्रिजर्वेशन ये वहाँ पर अपना डिस्टिल वाटर में करते हैं, -80 में करते हैं, ग्लिसरॉल उसमें डालते हैं, 10% ग्लिसरॉल लेते हैं फंजाई में, उसमें इनकी अगार डिस्क गोल गोल काट लेते हैं, और उसमें वो प्रिजर्व करके रखते हैं -80 डिग्री में, जिससे ये लॉन्ग टर्म तक ये स्टोर रहता है। जैसे हम स्लांट्स बनाते हैं लैब में, उसी तरह से ये ग्लिसरॉल में हम काफी समय 20-20 साल तक, 25-25 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये है फेमलोंग, ये अराउंड 20 किलोमीटर दूर है इनके डिग्री कॉलेज से। आप देख सकते हैं राइट में सैम्पलिंग ट्रिप्स की फोटोग्राफ्स कुछ हैं, और बॉटम में आप देखें कुछ ऑफ द मशरूम्स इन्होंने आइसोलेट कर कलेक्ट किया हुआ है। These mushrooms are then brought into laboratory, और लेबोरेटरी में फिर आइसोलेशन वो क्या रखते हैं। ये देखिए some of the cultures that they have isolated. इसमें इन्होंने ना ही सिर्फ मशरूम्स आइसोलेट किया है, इन्होंने कैरोटिलिटिक फंजाई आइसोलेट किया है, इन्होंने लिटर से भी आइसोलेट किया है, एंडोफिटिक फंजाई भी आइसोलेट किया हुआ है। एंडोफिटिक फंजाई को आइसोलेट करने के लिए आप लीफ को स्टेराइल करते हैं, पानी से डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से वॉश करते हैं, 70% इथेनॉल से वॉश करते हैं, और फिर उससे एंडोफाइट्स को जब पेट्री डिश में आप रखते हैं तो उसमें से फिर उसमें टिश्यूज निकलती हैं। सामने आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, सबसे राइट हैंड साइड, टॉप हैंड साइड में देखेंगे तो वहां पे एंडोफाइट का उन्होंने आइसोलेशन करना बताया हुआ है। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो कैरोटिलिटिक हेयर्स। कैरोटिलिटिक कौन से होते हैं? जो अपने बाल वगैरह रहते हैं, जब बाल से अपन कटिंग की दुकान में या कहीं पे जमीन पे गिरते हैं तो वहां पे फिर वो फंजाई ग्रो करना शुरू करती हैं। तो इनको आइसोलेट करने के लिए अपन जो बाल रहते हैं, जो हेयर्स हैं, इनको अपन स्टेराइल करते हैं, इनको वॉश करते हैं, और फिर उनको अपन सॉइल में इंक्यूबेट करते हैं, पानी देके, थोड़ा सा वाटर देके, स्टेराइल डिस्टिल वाटर। तो कुछ दिनों के बाद में आप देखें जैसे वो पेट्री डिश में दिख रहा है, जहां जहां हेयर है वहां वहां वो फंगस ग्रो करती है,
और बाकी जगह फंगस ग्रो नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ हेयर डिग्रेडिंग वाली फंजाई होती हैं। तो इस तरह से केराटिनोलिटिक फंजाई, केराटिनोलिटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने बाल जो हैं केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और उनको डिग्रेड करने वाले फंजाई को केराटिनोलिटिक फंजाई बोलते हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आप देखें, दीज आर द लिटर फंजाई, दीज आर बीन आइसोलेटेड बाय कलेक्टिंग लिटर फ्रॉम द फॉरेस्ट, दीज आर बीन क्रश्ड, लिटर को क्रश किया जाता है मिक्सर में, और उसके बाद में जब इसको डिस्टिल वाटर से स्टॉक सॉल्यूशन बना के सीरियल डाइल्यूशन जैसे अपन करते हैं वो बना के फिर आइसोलेट करते हैं, तो आप देख रहे हैं उसमें से फंजाई आइसोलेट करते हैं। तो इन दिस वे वी आर आइसोलेटिंग डिफरेंट फंजाई फ्रॉम डिफरेंट निशेस ऑफ द बोथ द बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई में देखें तो अभी तक हमने जो अचानक डाइवर्सिटी उनमें से आउट ऑफ अराउंड 200 फंजाई 56 हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, और उनमें से 164 जो फंजाई कल्चर्स हैं वो अभी सीक्वेंसिंग की स्टेज में हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उसकी मॉर्फोलॉजी भी देखते हैं मॉर्फोलॉजी के माइक्रोस्कोप के अंदर, और मॉर्फोलॉजी के साथ में हम उसकी सीक्वेंसिंग भी करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग, हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करके फिर सीक्वेंसिंग जनरेट करते हैं। और उसमें कुछ जो है अपना सिंगल रीजन सीक्वेंसिंग से हो जाता है, कुछ रीजन के लिए अपन को प्रोटीन कोडिंग जीन को सीक्वेंस करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बेस पे फिर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये प्रोटीन कोडिंग जीन्स क्या होते हैं, जैसे कि RPB1 देख रहे हैं, RPB2 देख रहे हैं, ये अपने प्रोटीन्स होते हैं अपने फंजाई के अंदर, TUB देख रहे हैं, बीटा ट्यूबुलिन, देन TEF देख रहे हैं, ट्रांसलेशन एलोंगेशन फैक्टर्स, तो ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये अपन को मॉलिक्यूलर लेवल पे फंजाई को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कमिंग टू द, और जब अपन सीक्वेंस जनरेट होता है, जब अपन का डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, तो सीक्वेंस जब जनरेट होता है उसको अपन इंटरनेट पे एक NCBI वेबसाइट है, NCBI वेबसाइट के अंदर अपन ब्लास्ट करते हैं, वहाँ सीक्वेंस पेस्ट करते हैं, तो जब वो अपने डेटाबेस, उनका एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस से जब वो मैच करते हैं तो अपन को पता चलता है कितनी सिमिलरिटी है कितनी सिमिलरिटी नहीं है, उस तरह से, ठीक है। ये उसी तरह का जैसा आपका ब्लड ग्रुप है, आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने गए, A पॉजिटिव निकला तो आपका मैच करते हैं भाई A पॉजिटिव किन किन का है, B पॉजिटिव निकला B पॉजिटिव किन किन का है, इस तरह से। उसी तरह का ये है, अपन ने सीक्वेंस जनरेट किया, अपन ने डेटाबेस में मैच किया और देखा कि अपना सीक्वेंस ऑलरेडी डिस्क्राइब फंजाई है या कि नया फंजाई है। राइट हैंड साइड में आप देख लें, सिमिलरिटी परसेंट 98.89 लिखा है, 91.38 है, 89.60 है, इस तरह से सबकी सिमिलरिटी अपन मैच करते हैं। जब सिमिलरिटी को मैच करते हैं तो 98 या 97 से कम जो सिमिलरिटी दिख रही है, जैसे कि 91, 89, 92, 88, 92, जो कम सिमिलरिटी है उसका मतलब ये होता है कि ये नोवल फंजाई है, नया फंजाई है, ये ऑलरेडी डिस्क्राइब नहीं है, तो इसको अपन फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी करनी होगी, इसकी सीक्वेंसिंग करनी होगी और दोबारा इसकी ट्री बनाना पड़ेगा, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा और इसको अपन पेपर पब्लिश करके नया फंजाई फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, देन जो सेकंड है फेमोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें 93 कल्चर्स अभी तक आइडेंटिफाई हमने किए हैं और बाकी 73 की मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हमने कर ली है, और बाकी जो रिमेनिंग 189 कल्चर्स है इनका भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। ओके, एंड दिस हैव ऑल, इसको हम डिपॉजिट भी करते हैं, इनको हम अपना NCMR NCCS जो है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे हम कल्चर डिपॉजिट भी करते हैं। जैसे कि आप कोई फंजाई आइसोलेट कर रहे हैं, आप अपनी लैब में मेंटेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप हमारे यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट होता है। तो इसी तरह से हम ये फंजाई को अपने कल्चर कलेक्शन में भी डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, जैसे हमने कल्चर कलेक्शन में डिपॉजिट कर लिया है तो ये कल्चर फिर कल को आपको जरूरत पड़ेंगे होंगे तो आप हमारे कैटलॉग में देख सकते हैं, और कैटलॉग से आपको जरूरत होगी तो आप वो कैटलॉग में हार्डली 500-600 रुपए में परचेज कर सकते हैं और आप अपने रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। कोई PhD करना चाहता है, कोई MPhil रिसर्च करना चाहता है, वो आप कर सकते हैं। In this way we deposit these cultures at our culture collection. So as described by Sandhya madam in the introduction, we have more than 15,000 cultures in our culture collection, and these are regularly being used by industries as well as academics for their research purposes. Coming to my next slide, just I think it has a little bit hang. Yes. सो इनकी मॉर्फोलॉजी हम करते हैं इस तरह से। आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये अपना ट्राइकोडर्मा का फोटोग्राफ है। देन बीच में आप जो देख रहे हैं ये अपने पेनिसिलियम का फोटोग्राफ है। इसी तरह से जितनी आप देख रहे हैं ये नीचे राइट में देख लीजिए, आपका कोलेट्राइकम है, फिजेरियम है, पिस्टलोप्सिस है, इन सब की फोटोग्राफ्स आप जैसे देख रहे हैं इनको अपन मॉर्फोलॉजी से आइडेंटिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे अपन ने
प्लेट में मैंने कल्चर करके बताया, उस कल्चर से अपन स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड बना के अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और फिर अपन अच्छी फोटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं। इनका मेजरमेंट करते हैं, स्पोर का, कोनिडियोफोर का, हाइफा का, इन सब का अपन कोनिफोर सबका मेजरमेंट करते हैं। जो हाईलाइन रहते हैं उनको अपन ब्लू, कॉटन ब्लू से स्टेन करते हैं, और जो नहीं होता है उनको अपन को ब्राउन कलर का देखते हैं। ये ब्लू कलर का जो कॉटन ब्लू है ये अपना आपके काइटिन वगैरह में अटैच हो जाता है, जिससे कि ये स्टेन होकर हमको अच्छे से दिखता है। कॉटन ब्लू लैक्टोफेनॉल जो आप स्लाइड्स बनाते हैं, लैक्टोफेनॉल लैक्टिक एसिड जो है उसको डीनेचर करके रखता है, जिससे कि वो अपन को लाइव नहीं रहता है। देन फिनोलिक उसमें रहता है, उसको पूरा से फिक्स्ड कर देता है, एंड देन वी आर एबल टू वेरी नाइसली मेक अ गुड स्लाइड यूजिंग कॉटन ब्लू लैक्टोफेनॉल। देन आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे कुछ का एक्सप्लोरेशन भी नहीं होता है, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं बीच का जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में स्टेनाइडीज लिखा हुआ है। देन थर्ड कॉलम में आप देखेंगे तो स्पेसिफिक मीडिया लिखा हुआ, किस मीडिया या किस कंडीशन में स्पोरुलेशन आ रहा है। कई बार क्योंकि फंजाई के लिए आप जानते हैं स्पोरुलेशन जरूरी है, जैसे आपने एस्परजिलस देखा होगा माइक्रोस्कोप में, पेनिसिलियम देखा होगा। बिना स्पोरुलेशन के कोई भी फंजाई अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब तक कि वो माइसिलिया स्टीरेला के ग्रुप में नहीं आता है। तो जिन को स्पोरुलेट नहीं आते तो अपन स्पोरुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अपन डिफरेंट कंडीशंस ट्राई करते हैं, जैसे कि माल्ट एक्सट्रैक्ट में ग्रो किया, जेपेक्स डॉक्स में ग्रो किया, या ब्लू लाइट दे दी, या बार्क में इनॉकुलेट कर दिया। इस तरह से अपन डिफरेंट कंडीशन यूज करते हैं जिससे कि स्पोरुलेशन आ पाए। तो ये आप कॉलम में देख रहे हैं ये स्टेनाइडीज और किस कंडीशन में उसने स्पोरुलेशन दिया, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके अलावा हम इसमें एक कंपेंडियम भी बना रहे हैं, एक मैनुअल टाइप का बना रहे हैं, जिसको हम डिफरेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजेंगे भी, जिसमें कि अभी तक हमने 33 फंगल कल्चर्स किया हुआ है, और इसमें हम 92 डिस्क्रिप्शंस करने वाले हैं, जिसमें कि फंजाई की कल्चर प्लेट की फोटोग्राफ है, माइक्रोस्कोप की फोटोग्राफ है, फाइलोजेनेटिक ट्री रहे, कंपेंडियम बना रहे हैं, जो हम डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया अलग अलग डिपार्टमेंट में फिर सर्कुलेट भी करेंगे। इसके अलावा जो नोवेल फंजाई हैं, जैसा आपको मैंने पिछले कुछ स्लाइड के पहले बताया था कि जो कुछ फंजाई की सिमिलरिटी अगर 98% से कम हो तो उनको अपन नोवेल फंजाई मानते हैं कि वो नया फंजाई है। तो ऐसे फंजाई को अपन को फिर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना पड़ता है। डिस्क्राइब मतलब उसका पूरा एक्सप्लोरेशन का मेजरमेंट स्लाइड बना के पूरा हमको डिस्क्राइब करना पड़ता। हेलो डॉक्टर शर्मा, हेलो डॉक्टर शर्मा सर, आपने शायद खुद को म्यूट कर रखा है। सर, कैन यू हियर मी? हेलो रोहित सर, शायद आपने खुद को म्यूट कर रखा है। हेलो संध्या, एनी प्रॉब्लम? यस यस सर, आप सुनाई दे रहा, ठीक है। कौन सी स्लाइड तक आपने देखा हुआ है? अच्छा, ये वाली स्लाइड देखी है? ये मेरी आवाज कहाँ तक आ रही थी? सर अभी आप सुनाई दे रहा, स्लाइड नहीं दिख रही है। ओके, आई विल शेयर। या यस सर। सो कहाँ तक दिखा? यहाँ तक दिख रहा था? यस सर, यस सर। Okay, can I start from here onwards? Okay. Yes sir, yes sir. Okay. So ये मैं सीक्वेंसिंग बताना चाहूंगा आपको कि सीक्वेंसिंग जो है ये ITS रीजन सीक्वेंसिंग क्या होती है।
जब अपन डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डीएनए में कई सारे रीजन्स रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक 18S आरडीएनए का सीक्वेंस है, ये 5.8S आरडीएनए है, ये 28S आरडीएनए है, ये 5S आरडीएनए है। तो ये जो ITS1 और ITS2 है, ये पूरा रीजन जो होता है इसको अपन यूज करते हैं टेक्सोनॉमी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, और दूसरा ये वाला रीजन अपन यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंसिंग के लिए। ओके, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक राइबोसोमल रीजन है, और राइबोसोमल रीजन के अपन यूज करते हैं। ये रीजन जो होता है ITS1 और ITS2, ये रीजन अपन यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसमें क्या करना पड़ता है, पहले अपन डिटेक्शन करते हैं, PCR करते हैं, पैक प्यूरिफिकेशन करते हैं और सीक्वेंसिंग करते हैं। ओके, नाउ सो इसमें अपन फिर ये सीक्वेंस जनरेट होता है, ये जो पीक्स देख रहे हैं ये सीक्वेंस जनरेट होता है। ये सीक्वेंस को अपन आगे लेके ये पीक्स जनरेट करते हैं, और इस सीक्वेंस के बाद में अपन इस तरह का सीक्वेंस जनरेट करते हैं। और ये जो नीचे वाला सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये वाला सीक्वेंस अपन वेबसाइट में ब्लास्ट करते हैं, जिसके कारण आपको आइडेंटिफिकेशन पता चलता है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर का रीजन जो है, ये ब्लू जो रीजन है वो अच्छे सीक्वेंस है, येलो वाले रीजन है वो खराब सीक्वेंस है। तो जो ब्लू वाला रीजन है वो अपन यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाकी के रीजन अपन काट देते हैं, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस एडिटिंग। ठीक है, और फिर नीचे फास्टा फॉर्मेट कहलाता है। फास्टा फॉर्मेट का अपन सीक्वेंस लेके अपन वेबसाइट में, NCBI वेबसाइट में ब्लास्ट करते हैं, उससे आइडेंटिटी पता चलती है। ओके, और उसके बाद में अपन फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री जो आप ये देख रहे हैं, दो टाइप के फंगस के फाइलोजेनेटिक ट्री आप देख रहे हैं। अगर आप राइट वाला फाइलोजेनेटिक ट्री देखें, जिसको येलो उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो उसमें जो एक स्ट्रेन आप देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं आप, वो किसी से ग्रुप नहीं कर रहा है, वो अलग है पूरा, जिससे अपन को पता चलता है कि ये एक नोवल फंजाई है। ऐसे लेफ्ट वाला आप ट्री देखें, जहां मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, वो देखें किसी के साथ में ग्रुप नहीं कर रहा है। तो जब वो किसी के साथ ग्रुप नहीं करता, तो फिर वो कहलाता है कि एक ये नोवल फंजाई हो सकता है। इसको अपन को अभी तक मतलब नोन नहीं है फंजाई, इसको अपन को नया फंजाई डिस्क्राइब करना है। ओके, इसी तरह का ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो मैं बता रहा हूँ, ये भी फाइलोजेनेटिक ट्रीज उसी तरह के हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो मेरेस्मियस का नीचे स्ट्रेन दिख रहा है, ये किसी से ग्रुप नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अलग क्लैट कर रहा है, और ये इस एक तरह का नोवल फंजाई है। ठीक है, इसमें आप देखें, इसमें हमने क्या किया है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है मेरेस्मियस का, जिसको अपन बहुत बड़ा ट्री है तो उसको छोटे में हमने दिखा रहे हैं, और ये भी किसी से ग्रुप नहीं कर रहा है, ये सेपरेटली आपको उसमें दिख रहा है। ओके, देन yes, now you can clearly see. I'll share my separate here now. So this is another phylogenetic tree. So this phylogenetic tree, you can see that it is a very complex phylogenetic tree, जिसको हमने राउंड उसमें किया हुआ है। और इसमें भी हम नोवेलिटी जो दो हम दिखा रहे हैं, जहाँ लेफ्ट हैंड से रेड दिख रहे हैं और राइट हैंड से ब्लू पॉइंट्स और पर्पल पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये सारे ही नोवेल बताते हैं, ये किसी से ग्रुप नहीं कर रहा है। तो इस तरह के फाइलोजेनेटिक ट्री बना के हम पता कर लेते हैं कि ये नया फंगस है कि ऑलरेडी नोन फंगस है। ओके, अब कोई अगर आपको आपकी लैब में नया फंगस मिला है, तो कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले उसका सीक्वेंस करना चाहिए। अगर आपको माइसिलियल फॉर्म मिल रहा है तो ITS सीक्वेंस करें, और अगर आपको ईस्ट मिल रहा है तो वो LSU करेंगे आप। इसको सबसे पहले सीक्वेंस कर लें। इस सीक्वेंस को आप नेट पे NCBI में ब्लास्ट करके सर्च कर लें कि वो नया है कि नहीं है। सिमिलैरिटी, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जब सिमिलैरिटी कम रहती है, मतलब 95 है, 90 है, 89 है, तो उसके अगर सिमिलैरिटी कम आती है तो इसका मतलब है कि वो नया फंगस हो सकता है। तब फिर अपन जाके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी करते हैं, देखते हैं कि वो कितना शेप कैसा है, उसका स्पोर्स कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब हम स्टडीज करते हैं। फिर उसकी फिजियोलॉजी करते हैं, उसको डिफरेंट टेम्परेचर उगा के देखते हैं कि भाई उसका टेम्परेचर कौन सा वाला टेम्परेचर अच्छा है, कौन सा टेम्परेचर खराब पे कम ग्रो कर रहा है, किस पे अच्छे से ग्रो कर रहा है। पीएच देखते हैं, किस मीडिया पे अच्छा ग्रो कर रहा है वो देखते हैं। फिर अदर रीजन भी सीक्वेंस करते हैं। पहले अपन ने ITS सीक्वेंस कर लिया है, तो फिर दूसरे रीजन जैसे SSU, LSU और भी प्रोटीन कोडिंग जीन्स भी अपन को आइडेंटिफाई सीक्वेंस करना पड़ता है। और ये सीक्वेंस जनरेट करने के बाद में अपन फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया। इसके बाद अपन को पब्लिश कर पाते हैं पेपर की
ये फंगस नया है, अभी तक नोन नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये एक समरी है नई ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये इसमें डीएनए इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, जीनोमिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं कहूँ आपको, आपने प्लोटेस का नाम सुना होगा, ऑयस्टर मशरूम, और बटन मशरूम का नाम सुना होगा। बटन मशरूम हमेशा ही सॉइल में मिलता है और ऑयस्टर मशरूम हमेशा ही भूसे में या लकड़ी में मिलता है। तो अगर कोई अगेरिकस मशरूम लेके आए आपके पास में और कहे कि भाई सर मैंने ये भूसे से आइसोलेट किया या लकड़ी से किया है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, यू आर रॉन्ग, क्योंकि अगेरिकस हमेशा सॉइल में मिलता है। सिमिलरिटी अगर ऑयस्टर मशरूम में कोई लेके आए आपके पास में, कहे कि सर ये मैंने सॉइल से आइसोलेट किया है, तो आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑयस्टर हमेशा लकड़ी में या वीट स्ट्रॉ या पेडी स्ट्रॉ में मिलता है। तो इसलिए इस तरह से आप इकोलॉजी के बेस पे भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं उसको। ओके, जैसे फिजियोलॉजी है, टेम्परेचर है, कुछ फंजाई जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करती हैं, कुछ टेम्परेचर जो वो थर्मोफिलिक कहलाती हैं, कुछ फंजाई जो है वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करती हैं, 5 डिग्री 4 डिग्री पे, वो साइक्रोफाइल कहलाती हैं। इस तरह से आप बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी आल्सो यू कैन डिफरेंशिएट योर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनको जैसा कि मैंने बताया, इनको कंजर्वेशन करने के लिए कल्चर कलेक्शन में डिपॉजिट करना जरूरी है। तो हम सारी फंजाई को कल्चर कलेक्शन में डिपॉजिट भी करते जा रहे हैं, जिसको फ्यूचर में कोई आप यूज भी कर सकते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई भी कंट्री में हो यूज कर सकता है। इसके अलावा बायो प्रोस्पेक्टिंग भी हम देख रहे हैं, इनको हम एंटी माइक्रोबियल स्टडीज कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल स्टडीज के लिए हमने स्टैंडर्ड कल्चर्स लिए हैं जो वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड कल्चर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड बैक्टीरिया, स्टैंडर्ड फंजाई को हमने लिया है हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम एक्टिविटी देख रहे हैं। इसके अलावा हम एंजाइम एक्टिविटी भी देख रहे हैं, जिस डिफरेंट एंजाइम्स कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप नीचे के टेबल में देख रहे हैं, लैकेज है, अमाइलेज है, पैक्टिनेस है, सेलुलोज, ये एंजाइम्स हम स्क्रीन कर रहे हैं। और इन एंजाइम्स को सिर्फ हम स्क्रीन नहीं कर रहे हैं, इनको स्क्रीन करके हम इंडस्ट्री को ये कल्चर सप्लाई भी कर रहे हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो बायोथेनॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो बायोथेनॉल जैसे आपके आज के तारीख में पेट्रोल में 12% बायोथेनॉल मिक्स करके दिया जा रहा है। तो वो बायोथेनॉल इंडस्ट्री जो है अपना सेलुलोज, मतलब जो आपका बगासे है या शुगरकेन का वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसमें आपके ये लैकेज एंजाइम मिक्स करती है और लैकेज एंजाइम मिक्स करके उनको फिर अपना बायोथेनॉल प्रोड्यूस करती है। तो उन इंडस्ट्रीज को ये लैकेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग फंगस की जरूरत पड़ती है, तो हम ये भी उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि 190 कल्चर्स में से 92 कल्चर्स पॉजिटिव मिले हैं और माइलेज के लिए 38 कल्चर्स पॉजिटिव मिले हैं। सिमिलरली हमने पैक्टेज और सेलुलोज का भी स्क्रीनिंग चालू कर दिया है। ये भी पैक्टिनेस आप देख रहे हैं, जैसे आपने पोमेग्रेनेट देख रहे हैं, आपका ये अनार है, तो जो अनार जूस बनाने वाली इंडस्ट्री है या आपका ये संतरा जूस बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, इनकी जो छिलका होता है अनार का, उसमें खूब सारा पैक्टिन होता है। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, उनको फेंकने के बजाय उनको दूसरी इंडस्ट्रीज को देती है, जहां से वो पैक्टिन को यूज करके पैक्टिनेस अपना फंगस कल्चर को यूज करके पैक्टिनेस एंजाइम्स बनाती है और पैक्टिन को डिग्रेड करके स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है। तो इस तरह से ये सेकंड छिलका भी यूज हो रहा है, काफी बड़ी इंडस्ट्रीज ये हो रही है। तो इन इंडस्ट्रीज को पैक्टिनेस वाले प्रोड्यूस वाले फंजाई की जरूरत पड़ती है, जिनको हम ये इसलिए स्क्रीन कर रहे हैं, जिनको हम सप्लाई करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं जो ये लैकेज एंजाइम की पैटी डिश आप देख रहे हैं, जो ब्लू कलर है, जहाँ पे बड़ा ब्लू कलर है वहाँ पे ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ छोटा ब्लू कलर है मतलब वो कम एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और जहाँ कलर नहीं है मतलब वो कल्चर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। नीचे आप देख रहे हैं माइलेज, जहाँ पे व्हाइट जोन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहाँ पे माइलेज प्रोड्यूस कर रहा है कल्चर, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फंजाई कल्चर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सिमिलरली आप सेलुलेज का देख रहे हैं, जहाँ पे क्लियर व्हाइट जोन बन रहा है वहाँ पे सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से इनको अपन ये जो प्राइमरी स्क्रीनिंग कहते हैं, प्राइमरी स्क्रीनिंग हम 4 से 5 कल्चर एक पेटी डिश में करते हैं। अब जो पॉजिटिव कल्चर्स निकलते हैं उनको फिर से सेपरेट स्क्रीनिंग करते हैं, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू एनालिसिस करते हैं, फिर क्वांटिफाई करते हैं। तो ये जो पेटी डिश वाली स्क्रीनिंग है इसको अपन क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग कहते हैं। इसके बाद में जो अपन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम स्क्रीनिंग करते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव करते हैं, तब वहाँ पता कर पाएंगे कि एंजाइम कितना प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या पता कर रहे हैं, एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हो रहा है ये हम पता नहीं कर पाएंगे, और वो हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग में पता करते हैं।
इसके अलावा हम एंटी माइक्रोबियल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कुछ फोटोग्राफ, जैसे आप बीच वाली फोटोग्राफ देखें, हमने रेड से सर्कल किया हुआ है। बीच में जो वो है वो पैथोजन है, और किनारे जो फंजाई आप बता रहे हैं, ये हमने आइसोलेट की हुई फंजाई है। तो आप देख रहे हैं कि बीच में जो फंजाई है वो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा फंजाई है, बैक्टीरिया है, जो एक पैथोजन है। तो इसके अगेंस्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो फंजाई, देखिए आप थोड़ा सा उसको पुश कर रहा है, उसको पूरा ठीक से ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो इसलिए काफी इफेक्टिव दिखा रहा है, जहाँ पे रेड सर्कल मैंने किया हुआ है। सिमिलरली आप अगर ये वाली स्लाइड देखें तो इसमें भी आप देखेंगे जो ऊपर वाली राइट साइड में जहाँ सर्कल किया, वहाँ पे वो फंजाई जो है वो पूरा बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो इसमें भी इसमें बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी इसमें दिख रही है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट में। सिमिलरली आप ये दोनों बीच, ऊपर के और बीच के कल्चर आप देखें तो ये अगर कॉज करता है, इनके अगेंस्ट में रहता है, काफी अच्छी एक्टिविटी शो कर रहा है। दैट मीन्स ये फंजाई में अब जब हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग करेंगे तो इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक बनाने के काफी अच्छे कंपाउंड्स हैं इसमें। आप भी जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम फंजाई से बनी थी, इसी तरह इसमें भी जो एंटीबायोटिक वो है। संध्या, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज कट तो नहीं रही है? ओके, शुड आई कंटिन्यू? यस सर। यस यस। सो इसमें इसके अलावा काफ़ी हमारा इंटर एक्सचेंज और ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे जेआरएफ्स को ट्रेन किया है। तो आप लोग भी आना चाहें तो यहाँ पे रेगुलरली एवरी ईयर ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग्स भी करने आप आ सकते हैं, जहाँ पे हम आइसोलेशन करना सिखाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं, एंटी माइक्रोबियल ऐसे करना बताते हैं। इस तरह के आप यहाँ पे भी ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे एमएससी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने आ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डीबीटी ने हमको फंड किया हुआ, उसके थ्रू चल रहे हैं। इसमें हमारे साथ में काफ़ी 2 लोग, 2 अदर साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर वांगड़ी फ्रॉम सिक्किम एंड डॉक्टर कमलेश शुक्ला फ्रॉम रायपुर। और इसमें हम प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और जेआरएफ वगैरह ने काफ़ी हेल्प किया आइसोलेशंस वगैरह में। ये हमारी लेबोरेटरी है, ये हमारी अभी रेंटेड फैसिलिटी है, हमारी परमानेंट फैसिलिटी अभी इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा है। और इसमें इंस्टीट्यूट में हमारे पास में बैक्टीरिया 1.5 लाख है, फंजाई मोर देन 15,000 है। और ये सेंटर में आप देख रहे हैं, हमारी लेबोरेटरीज आप देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द, आई एम रेडी टू हियर योर क्वेश्चंस। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश मिश्र आप सबके बीच। जिनके भी प्रश्न हो वो डॉक्टर रोहित शर्मा सर से पूछ सकते हैं। सर लाइन में ही है, सर आप सबका इंतजार कर रहे हैं। जिनके भी कोई प्रश्न हो वो आप सब बेहिचक अपने रख सकते हैं। आप सबके प्रश्नों का स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही हो तो हम सब हेलो सर ट्रेनिंग के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं, किस मंथ में होती है? ट्रेनिंग एवरी ईयर जनवरी में होती है, नॉर्मली फर्स्ट वीक में होती है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। और इस साल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दी और ऑब्वियस रीजन जो आप जान रहे हैं कि कोविड के कारण इस बार नहीं हो पाए, ना ही ऑनलाइन कर पाए हैं, ना ही क्योंकि ये इन हैंड प्रैक्टिकल होती तो ऑनलाइन नहीं हो सकती थी, तो इस साल नहीं हुई। अदरवाइज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी होती है और इन द मंथ ऑफ जून, 2 साल में 2 बार होती हैं ये ट्रेनिंग्स। ये हुई जेआरएफ ट्रेनिंग लेना चाहें वो कर सकते हैं, फैकल्टीज अप्लाई करना वो कर सकते हैं। इसमें हम आइसोलेशंस करना,
आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन, डीएनए आइसोलेशन से लेके पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री तक बनाना बताते हैं। ये पूरा 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा डेजर्टेशंस जो बच्चे करना चाहें, डेजर्टेशंस अप्लाई करना कर सकते हैं। एमएससी वाले जिनके माइक्रोबायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी, जिनमें डेजर्टेशन है वो कर सकते हैं। डेजर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं है उसके लिए, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो आपको कम से कम 6 महीने अप्लाई करना होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका डेजर्टेशन जून से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जनवरी में अप्लाई करना चाहिए, अगर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो जून से अप्लाई करना चाहिए। धन्यवाद सर। और भी जिनके प्रश्न हो वो अभी सर से रख सकते हैं। अभी एक प्रश्न आया है सर, मैसेज आया है कि मैसेज किया है संजना सिंह जी ने कि बॉटनी वाले कर सकते हैं क्या? बॉटनी के लिए डेजिस्ट्रेशन उसमें है कि नहीं, आपके कोर्स सिलेबस में अगर डेजिस्ट्रेशन है तो कर सकते हैं, और बॉटनी वाले ट्रेनिंग जरूर कर सकते हैं। चार्ज बेसिस पे रहती है ट्रेनिंग, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल आपके आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल संजना जी, बॉटनी वाले भी कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में है, आपका रिलेटेड टॉपिक है तो आप भी इस रिसर्च में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उमेश मिश्रा, गर्ल्स पीजी से, और आपके टॉपिक से हम सब अवगत हुए, और निश्चित रूप से एक अद्भुत वर्क है खासकर के फंगल क्षेत्र में, और इससे जो आने वाले रिसर्चर हैं उनको भी बहुत सारी मदद मिलेगी। और जिस तरह से आपका वर्क एक्सपीरियंस है और जो नए रिसर्चर्स आपसे जुड़े हुए हैं और वर्क प्रोसेस है, उसको हम सब भी लाभ लेंगे। आप इस सेमिनार में अपना वक्तव्य दिया, हम सब के बीच आपने अपना अनुभव बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। इतने बिजी शेड्यूल में आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, थैंक यू। मैं डॉक्टर राही मैम से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राही मैम। बिल्कुल, थैंक यू उमेश। मैं अंत में धन्यवाद देती हूँ हमारे दोनों विषय विशेषज्ञ को, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, एवं मैं आशा करती हूँ कि आगे जब भी हमें उनके मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो वे जरूर हमें अपना समय देंगे। थैंक यू डॉक्टर राही एंड थैंक यू डॉक्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। ओके, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर नीता सिंह जी का, जो बहुत व्यस्त रहती हैं लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता में भी हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू मैडम। मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर राशि पांडे मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रश्मि अर्नौल मैडम का, जिन्होंने पूरा सहयोग किया हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आईडीपी सेल के प्रभारी डॉक्टर अमरजीत सिंह सर का, जिनके सहयोग के बिना यह वेबिनार होना संभव नहीं था। थैंक यू वेरी मच सर। अंत में मैं धन्यवाद दूंगी उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। सुश्री सरिता शर्मा, अनुराग ठाकुराय, संजय, मनोज, गुड़िया, सत्येंद्र, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर।